Hi everyone, आज हम करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत airbrush makeup on the beautiful Anamika. I'm going to do a half cut crease. I'm also going to do pink colors into the crease today and do a beautiful pop of gold on the lids. So let's get started. As always, I start with the brows and please remember इससे पहले मैं skin prep कर चुकी हूँ. As always, I'm using the P Louise eyeshadow base on the lids. Just make sure कि आप बहुत thick layer ना करें. It should just be an even clear canvas all over the lids. For the eyes today, I'm using the Huda Beauty Naughty palette, and if you're somebody who's looking for soft shades of matte pink eyeshadows, brown pink eyeshadows, and burgundies and dark maroons, this is the palette you're going to love. It also has beautiful pink and gold shimmers, which has the most amazing pop. Highly recommended. And of course, the brushes that I'm using are from my own brand, the Nari Studio. I also wanted to mention कि मैं हर color से 3 to 5 coats करती हूँ, specifically when it comes to the matte eyeshadows. मुझे ये भी लगता है कि उसकी blending perfect करने के लिए 3 to 5 coats की ज़रूरत होती है. I always start with the light color and I move on to the darkest. And once I am very happy with the blending, मैं हल्का सा concealer लेके कट क्रीज करती हूँ एंड इसके लिए बस आपको हल्की सी प्रिसिशन चाहिए एंड दिस डेफिनेटली नीड्स प्रैक्टिस. मुझे एक मोनोक्रोमैटिक मेकअप नहीं करना था, इसीलिए आई चूज टू डू गोल्ड ऑन द लिड्स एंड इफ़ यू सी द गोल्ड ऑन द लिड्स इट इज़ सो अमेजिंग. कैन यू सी दैट पॉप? ऑफकोर्स इसके ऊपर आई एम ऑल्सो अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ शिमर, बट आई एब्सोल्युटली लव द वे इट हैज़ टर्न्ड आउट. And once I'm happy with that, I am going to do a smoky eyeliner. And smoky eyeliner करने के बाद I make sure I set it with a matte eyeshadow. स्किन के लिए इस बारी मैं यूज़ कर रही हूँ YSL का प्राइमर एंड इसका नाम है Touche Eclat. इट्स अ ब्लरिंग प्राइमर एंड आई रियली लाइक इट. एंड एज ऑलवेज मैं मैक कंसीलर्स यूज़ करती हूँ पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और डिस्कलरेशन को छुपाने के लिए. एंड नाउ इट्स टाइम टू एयरब्रश. सो टुडे इट्स गोइंग टू बी अ फुल फेस ऑफ एयरब्रश जहाँ पर मैं कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइट हर चीज़ एयरब्रश से करूँगी. I absolutely love the airbrush technique. मुझे लगता है this is one of the most long-lasting and effective ways to make skin look perfectly beautiful. Once I finish airbrushing the skin, मैं उसको थोड़ा सा time देती हूँ for it to dry up and I make sure I set it with very little powder. Towards the end मैं सारी फिनिशिंग टचेस करती हूँ इंक्लूडिंग अप्लाइंग लैशेस. मैं लैशेस क्लाइंट के ऊपर इनिशियली नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है दैट व्हेन आई एम डूइंग कंसीलर एप्लीकेशन एंड आई आस्क द क्लाइंट टू लुक अप, इट्स अ चैलेंज एंड अ टास्क फॉर देम टू लुक अप. सो दिस आई प्राइमरीली डू फॉर माई क्लाइंट्स कम्फर्ट. As always, मैं यूज़ कर रही हूँ नारी के lashes. I'm gonna leave all the details in the description box. I also cover any kind of glue traces with eyeliner. I add kajal, I also smoke it out, I set it with the matte eyeshadow and of course lipstick application. अनामिका का स्किन टोन हल्का सा गहरा है एंड ऐसे स्किन पे लाइट लिप्स करने के लिए एक डार्क लिप लाइनर करना मैंडेटरी है और उस डार्क लिप लाइनर को मैं एक हल्के लिप लाइनर से ज़रूर कवर करती हूँ एंड देन ऑफ कोर्स आई ऐड लिपस्टिक एंड आई पर्टिकुलरली लाइक लाइट कलर लिप्स विद ग्लॉस. आई यूजुअली ट्राई एंड अवॉइड ग्लॉस ऑन कलर्स लाइक रेड एंड हॉट पिंक. So I hope you guys like the finished look. Do not forget to subscribe to my channel. Press the notification button. Let me know in the comments what did you love the most about this look. Thank you.